Hi, let me give my introduction. I am currently a final year student studying engineering in computer science, but sadly मेरा अभी तक कोई अच्छा खासा प्लेसमेंट नहीं लगा है। वेट, आप लोग सोच रहे होंगे जिसका खुद का प्लेसमेंट नहीं लगा वो क्या सिखाएंगे हम लोगों को। देन ये गलत फहमी दूर करते हैं। मैं इधर आप लोगों को सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। I am here to study actually. One day I stood in front of the mirror and I thought that I have to pause everything and restart from zero. So zero से restart करते हैं। मैं खुद पढ़ूंगा और उसके साथ आप लोग भी, जिसको जिसको ज़रूरत है। मे बी आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल है तो मेरा वीडियो क्यों देखेंगे। बिकॉज मैं एआई का यूज़ करूँगा, स्पेसिफिकली मेनी जेनरेटिव एआई। 90s तक बुक थे, देन द इंटरनेट रेवोल्यूशन केम एंड देन यूट्यूब केम। स्टूडेंट्स began using this to study, and then AI came into the picture in 2021. With the respect to all YouTubers, but I came across almost every YouTuber and nobody is actually using AI effectively to study or to teach. So in my channel, I am going to use AI throughout every video and you will learn the exact use of artificial intelligence, and in addition to that gain technical knowledge and programming skills as well. Firstly, we are going to study C++. Anyone can learn from zero to advanced. It will also be helpful for placements as well. We are going to practice DSA as well. So let's dive into the learning journey together. So let's walk through it. जैसे मैंने बोला हम लोग एआई से सीखेंगे तो let's type ChatGPT. अभी के लिए ChatGPT करें so हम लोग सीखेंगे C++. So just let's write the prompt. Hi, I am new to programming, but I want to learn about C++. So just tell me about C++. Why is it used? Its advantages, or if there's any disadvantages, and write the first code as hello world. And explain it. तो अभी हम लोग देख सकते हैं इधर दे दिया. So what is C++? C++ is basically a general purpose programming language created by John Strostrup. I don't know whether it is the right spelling. 1980s. It was designed as an extension of the C language, adding object-oriented programming features like classes and objects. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है उसके विस्तार में जाएंगे बाद में, और अभी के लिए
ये जानना जरूरी है सी लैंग्वेज जो एक लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. So it is basically an extension of C language. So C++ is known for being fast, powerful and close to hardware. Okay. What is C++ used for? C++ गेम डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मेनली यूज होता है, जैसे विंडोज हो गया, मैकओएस हो गया. बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है C++ लैंग्वेज में. एम्बेडेड सिस्टम्स हो गया, माइक्रो कंट्रोलर्स, रोबोट्स, फाइनेंस एंड बैंकिंग सॉफ्टवेयर में बहुत चलते हैं. डेस्कटॉप एप्लीकेशंस लाइक फोटोशॉप और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. कॉम्पाइलर क्रिएट करने के लिए C++ लैंग्वेज यूज होता है. मतलब कॉम्पाइलर लिखा ही जाता है C++ लैंग्वेज में. एडवांटेजेस है, इट इज हाई परफॉर्मेंस, वेरी फास्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो पहले ही बोला. पोर्टेबिलिटी मतलब दिस प्रोग्राम कैन रन ऑन मेनी प्लेटफॉर्म्स विद मिनिमल चेंजेस. इट हैज वेरी रिच लाइब्रेरी, मतलब इसका बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन एंड स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है. उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. एंड obviously using C++ we can easily manage, we can directly manage memory. uh, there are some disadvantages such you can see it has an complex syntax. मतलब पाइथन और जावास्क्रिप्ट से थोड़ा सा हार्ड है, बट नॉट सो हार्ड, थोड़ा सा हार्ड है. मैनुअल मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब हम लोगों को मेमोरी मैनुअली फ्री करना पड़ता है. बिल्ट इन सेफ्टी भी कम है. एंड थोड़ा सा लिखना एंड डिबगिंग C++ कोड टाइम लगता है. तो दिस इज द लाइब्रेरी, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड. So let's just copy the code. So let's just create a new folder. Its name is C++ tutorial and open it VS Code. Make sure that you have VS Code or any IDE you want, but VS Code is recommended. And let's just copy paste the code and run it. So this is the main syntax of writing code in C++. Like we have to first write the library we want to use. Like this is a input output string library, and this is the using namespace. STD actually allows us to use standard C++ names directly. If we just remove the line, we can also write the code, but using this we have to write like this, then it will run. Otherwise it will throw an error दिखाएगा. So it's better to use, it's better to write always the beginning of the code. And this is the main function in which we are going to write the code. ये मेन फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं. So this was the most basic code